Hey guys, this is Sahil and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is month start special Weekly Mastermind जहाँ पे हम लोग overall market का analysis करेंगे so as to understand that what's all happening in the market and जो भी हमने technical Wednesdays में understand किया था using our basic way of analysis that is monthly, weekly and daily time frame. That is what we call as top-down approach, where monthly depicts long-term trend, weekly depicts medium-term trend, and daily depicts short-term trend. And we are going to use price, pattern, Bollinger Bands, and RSI so as to understand what's all happening in the market. And आपको अगर इन सारे टॉपिक्स को बेसिक से लेके एडवांस तक अंडरस्टैंड करना है, यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट सीरीज called as Basics of Technical Analysis. The link to that is given below in the description section. सारे वीडियोस को, सारे टेक्निकल टॉपिक्स को मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक कवर अप किया है along with examples, ताकि आपको बहुत सिंपल फॉर्मेट में समझ में आ सके that what technical analysis is all about and what is our way of analysis as well. And let's quickly have a look at market for this week, ताकि हम लोगों को समझ में आ सके that what are the sectors which are outperforming and what are the sectors which are underperforming. Overall market में हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या यहाँ से बेस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है. That's what we will analyze and understand with the help of this short video. So once again, welcome back to Weekly Mastermind for 5th of October 2025. जहाँ पे हमारा एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम मार्केट इंडेक्स देखेंगे, देन वील हैव अ लुक एट आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. तो मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी एंड सेंसेक्स अप बाय 0.97, बैंक निफ्टी अप बाय 2.20, मिड कैप अप बाय 1.87, इंडिया विक्स डाउन बाय 11.98 व्हिच इज ग्रेट, एंड यूएसडी आईएनआर पॉजिटिव में है, दैट इज अप बाय 0.07, काइंड ऑफ नेग्लिजिबल है बट स्टिल इट्स इन पॉजिटिव जोन, so that's a sign of concern. Then we have Nifty 50 monthly above 60 after 60 support, which means right now it's in the zone of very bullish because वो moving average का भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है एंड फिलहाल तो बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है. वीकली में कंसोलिडेशन में है एंड डेली में भी फॉर द टाइम बीइंग इट्स इन अ कंसोलिडेशन ट्रेंड इटसेल्फ. और जब तक वो मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हो सकता है कि वो थोड़ा सा रेजिस्ट करे एंड थोड़ा सा कंसोलिडेट करे. So we have to wait for proper moving average and RSI in order to break out on the upper side. Then we have Bank Nifty. अगेन वो जो था दैट वाज फ्रॉम बुलिश पर्सपेक्टिव एंड बेरिश में, यानी कि वो मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले लेगा, आरएसआई 40 के नीचे चला जाएगा. दैट्स व्हाट द बेरिश थिंग इज ऑल अबाउट. बैंक निफ्टी का देखा जाए तो मंथली अबव 60, वीकली कंसोलिडेशन में है, डेली अराउंड 58 59. अगेन ये रेजिस्टेंस वाला जोन है एंड रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस अंटिल इट्स ब्रेकन आउट. तो वील हैव टू वेट फॉर प्रॉपर रेजिस्टेंसेस टू प्रॉपरली ब्रेकआउट एंड आरएसआई 60 का भी वेट करना होगा. एंड अगर वो ब्रेकआउट नहीं करता है और वो रेजिस्ट कर जाता है, अगेन फॉर द टाइम बीइंग इट विल टर्न अराउंड इनटू अ कंसोलिडेशन ट्रेंड इटसेल्फ. और तब भी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस क्लियर नहीं रहेगा वेदर इट इज गोइंग टू गो ऑन द बुलिश साइड और ऑन द बेरिश साइड. देन वी हैव प्राइवेट बैंक्स मंथली अराउंड 60, वीकली कंसोलिडेशन में है, डेली भी अराउंड 60 है. सो वी हैव टू वेट फॉर दैट एज वेल. अगेन ये रेजिस्टेंसेस के आसपास जो डबल रेजिस्टेंस था उसके आसपास आ चुका है एंड we'll have to wait for proper breakout on this as well. अगर बुलिश कैंडल के साथ 60 का ब्रेकआउट हो जाता है, रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो जाता है तो वेल एंड गुड. इफ नॉट देन यहाँ से भी थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, कंसोलिडेशन में जा सकता है. Then we have PSU banks monthly above 60, weekly above 60, daily above 60, which means PSU banks are outperforming even Bank Nifty. So we have to look out for long side opportunities in PSU banks, not in private banks. Then we have sector specific movement. देखें तो सारे sectors were on the positive side, जिसमें से metal was the best performing sector up by 3.93, followed by Bank Nifty 2.20 and so on. तो निफ्टी आईटी देखा जाए तो मंथली कंसोलिडेशन में है, डेली वीकली में 40 के आसपास है, 3940, एंड डेली में 40 के नीचे है. सो एज ऑफ नाउ फॉर द टाइम बीइंग विच इज लाइक शॉर्ट टर्म ट्रेंड, तो वो बेरिश में जा चुका है एंड लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू सस्टेन बिलो 40 और नॉट. अगर वो सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से ट्रेंड और थोड़ा फॉर द टाइम बीइंग इट कैन गो इनटू अ बेरिश ट्रेंड, बिकॉज वहां पे जो है और भी एक सपोर्ट जोन है वीकली चार्ट में विच आई एम मार्किंग राइट नाउ. सो एट दैट रीजन वो सपोर्ट ले सकता है, बट तब तक कोई नीचे के साइड में कोई सपोर्ट एरियाज नहीं है. देन वी हैव निफ्टी ऑटो मंथली वीकली अबव 60, डेली में जो है आफ्टर सो लॉन्ग अब वो 40-60 के बीच में आया है एंड दिस इज गोना बी अ टेस्ट फॉर ऑटो सेक्टर एज वेल, बिकॉज अब वो मूविंग एवरेज के नीचे है. तो जब तक वो मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट नहीं करता है, आरएसआई 60 का ब्रेकआउट नहीं करता है, दैट विल स्टे इन अ कंसोलिडेशन ट्रेंड इटसेल्फ. Then we have metal monthly above 60, weekly above 60, daily भी above 60. So
after auto, metal was the next best performing sector. But abhi PSU banks are also performing good and metal sector is also performing good. So we can watch out and we can trade in long side in these sectors. Then we have FMCG, monthly, weekly, daily, all three time frames between 40-60. So जब तक proper breakout या breakdown नहीं होता है, we can avoid this sector. Then we have energy. Again, all three time frames between 40-60. We'll have to wait for proper breakouts and or breakdowns. Then we have pharma, monthly around 59-60, weekly sideways, daily भी sideways. And weekly में देखा जाए तो almost एक साल से it's in a consolidation zone itself, 40-60 के बीच में है. 60 का breakout कर रहा है but sustain नहीं कर पा रहा है, 40 का breakdown कर रहा है but वो भी sustain नहीं कर पा रहा है. So we'll have to wait in pharma sector for proper breakouts or breakdowns to happen. Then we have infra, monthly around 62, weekly consolidation में है, daily में 40 support लिया है, which means it is mentioning I am not so bearish. And अभी वाला जो bottom बना है, that is higher as compared to the previous bottom, which means यहाँ पे higher top higher bottom series बन सकती है, provided it breaks out of moving average, it breaks out of RSI 60 on the positive side, and it also sustains with that particular movement. Then we have reality. Again, all three time frames in a consolidation zone between 40-60, so we can avoid this. And then we have media. Again, ये भी तीनों टाइम फ्रेम्स 40-60 के बीच में है. So for the time being, PSU banks and मेटल सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड. ऑटो सेक्टर भी जो है हमें अभी रेडार पे रखना होगा. जब तक वो मूविंग एवरेज और RSI 60 का ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक इसको कंसोलिडेशन वाले सीरीज में रखेंगे. एंड जब वो ब्रेकआउट कर देगा, देन वी कैन वॉच आउट फॉर ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स एज वेल in order to trade on the longer side. But for the time being, we can trade in PSU bank stocks, and we can trade in a metal stocks as well. And I hope that you are absolutely clear with this analysis. So please do make sure that the way I have done this analysis, आप उसको stock specific में भी जाके analysis करो, so as to understand that which are the stocks which are actually outperforming and जिस पे आप trade ले सकते हो based on the systems or strategies which you might have learned from someone else or from our community, or maybe आपने खुद की भी invent की हो. Whatever the case is, you can follow that, but make sure that your risk management is at its place and your psychology is also at its place. And I'll see you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.